कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. This is a very beneficial campaign by iExamB, and here again I am before you, Amrita Kaur, the expert legal faculty at iExamB. I'm going to deal with you all another very important topic from constitutional law, evolution of Article 21. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो काफ़ी वास्ट है एंड इसे हम काफ़ी क्रिस्प मैनर में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में. Welcome to iExamB, and don't forget to subscribe to all our YouTube channels and take benefit of this campaign and all the exam courses preparation that is available at iExamB. You can visit our website iexamb.com या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हो, or else you can write to us directly at hello@iexamb.com and आपके जो भी queries है you can get it resolved. Let us start with our discussion about right to life. Right to life, of course, it is a very basic human right for human existence. ये सबसे important right है. So इसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के अंदर. राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, ये सारे ही इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स हैं एंड दे हैव बीन कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 3. यूडीएचआर ये सारे ही वर्ल्ड को एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ह्यूमन राइट्स का एक डिक्लेरेशन है. इसका ही एक पार्ट है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिससे हमें मिले हैं फंडामेंटल राइट्स सारे. एंड मैंने ये आपसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट आईसीसीपीआर एंड आईसीएससीआर, these are the two covenants of UDHR. UDHR बेसिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, and International Covenant on Civil and Political Rights talks about the fundamental rights which we have in our constitution, and ICESCR, that is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that is incorporating directive principles of state policy in our constitution. So अगर हम right to life की बात करें, of course that is fundamental right, and Article 6 of this covenant, International Covenant on Civil and Political Rights, covers this. सो ये है इंटरनेशनल सिनेरियो. ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है. ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड्स प्रोटेक्शन फॉर देयर राइट टू लाइफ. दिस इज अनडाउटेड कंसेप्ट नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ओवरऑल, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द इनहेरेंट राइट टू लाइफ. This right ought to be protected by the law and no one shall be deprived of his life arbitrarily. तो ये एक बहुत ही बेसिक फैसेट है राइट टू लाइफ के बारे में. इसे हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया है. अब आगे चलते हैं और आर्टिकल 21 का स्टेटस समझने की कोशिश करते हैं. इट इज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई डू वी से दैट आर्टिकल 21 इज हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लेट अस अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर इट. It guarantees to all the individuals right to life and personal liberty. ये सबसे बेसिक राइट गारंटी करने वाला आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, एंड अगर ये वायलेट होता है तो फिर आपको क्या ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंश्योर हो रहा है आपकी कंट्री में. इफ यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू, नो डाउट. इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो आर्टिकल 21 है उसका सेकेंड पार्ट कहता है इफ एट ऑल somebody's लाइफ और लिबर्टी इज बीइंग curtailed then that should not be done except for a procedure established by law. So ये जो procedure established by law वाला कंसेप्ट है ये लिया गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कंसेप्ट से. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलर कंसेप्ट है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ comparatively narrow concept. We will be looking at that towards the end of the video. The आर्टिकल 21 के डेवलपमेंट्स और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950 में ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो जजमेंट आया था, दैट मेड आउट अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. दैट वाज वेरी लिटरल इंटरप्रिटेशन.
इस केस में A.K. गोपालन के राइट्स के बारे में बात की गई थी. He was arrested under preventive detention and his rights to be protected, his Article 21 was being violated, ऐसा उसका कहना था. And Article 21 को उस समय बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था 1950s में, and it was said that people behind the bars are not protected by it. ऐसा तब का सिचुएशन था. But this situation has eventually changed, and till date now, if we see Article 21 is the most widely interpreted article. खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1963 में एक जजमेंट आया था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था that the term life that we use is something more and is meant more than mere animal existence. Not only animal existence, सिर्फ रहना है, आपको सोना है, खाना पीना है, इतना ही आपकी लाइफ नहीं है. लाइफ के बहुत सारे फैसेट्स हैं और वो सब इंश्योर होने चाहिए राइट टू लाइफ के अंडर. दिस इज व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट. इनहिबिशन अगेंस्ट इट्स डिप्राइवेशन एक्सटेंड्स टू ऑल दोज लिम्स एंड फैकल्टीज बाय विच लाइफ इज एंजॉयड. तो इस जजमेंट में ये कंसेप्ट डिस्कस किया था राइट टू लाइफ का. Then in Francis Correll Mullen versus Administrator Union Territory of Delhi 1981 में भी अगर हम देखें तो similarly इस concept को काफ़ी elaborate किया गया था. So judiciary has time and again elaborated the interpretation of Article 21. It has said that it cannot be restricted to mere animal existence and goes beyond just physical survival. It is not only limited to physical survival. Right to life includes right to live with dignity and all that goes along with it. Namely the bare necessities of life like adequate nutrition, clothing, shelter, facilities like reading, writing and expressing oneself in diverse forms and freely moving and mixing with the fellow humans. So ये lines अगर आप समझ जाते हो आपका पूरा concept आर्टिकल 21 का clear हो जाएगा कि ये concept कितना broad है. और ये judgments आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं कि किन किन judgments में ये बहुत ही लैंडमार्क डिस्कशंस हुए हैं राइट टू लाइफ के बारे में. वैसे तो आर्टिकल 21 पर इतने सारे जजमेंट्स हैं, देयर इज द लिस्ट इज endless and we will also be discussing some of the most important rights that have been interpreted as a part of article 21. इसकी भी लिस्ट एंडलेस है, जितना पढ़ो उतना कम है. कुछ बेसिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे. राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी इज वन ऑफ द राइट अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, and right to clean environment, right against illegal detention, right to legal aid, speedy trial, right to livelihood, right to education, right to privacy. ये जितने भी rights हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत सारे प्रोमिनेंटली जजमेंट्स के थ्रू इंटरप्रेट किए गए डिमेंशंस है आर्टिकल 21 के. ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, हुसैनारा खातून जजमेंट, देन ओल्गा टेलिस जजमेंट, उन्नी कृष्णन जजमेंट, देन राइट टू प्राइवेसी का के पुत्तुस्वामी जजमेंट. ये सारे जजमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 का कंसेप्ट डीपली समझने के लिए. एंड द मेन क्रक्स इज व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू दैट इट इज ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एंड देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस आर्टिकल एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतना ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया है. मनिका गांधी का जजमेंट ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. गोल्डन ट्रायंगल का भी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट 14, 19 एंड 21 फॉर्म द गोल्डन ट्रायंगल. दिस कंसेप्ट वाज गिवन इन मनिका गांधी जजमेंट ओनली एंड ऑल्सो इट वाज सेड दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर and it should not be arbitrary, fanciful and oppressive. So the concept of procedure established by law was focused on in this judgment. Procedure established by law should be interpreted in such a manner that the procedure in itself should be by a proper law which is right, just and fair. It is not something which is holding in itself arbitrariness. It is as per the whims and fancies of a person, or it is oppressing somebody's rights. It should not be like that. That is what is the procedure. If you are curtailing somebody's right to life and personal liberty, you can do it by a procedure which is established by law, but that should be जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ओनली. तो ये कंसेप्ट को भी काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन बाद में दिया गया है. इसको चेक करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रोविजंस है
The best one is Article 32. Article 226, you can immediately file a writ petition before the court of law. So if your Article 21 is violated and the procedure that is established by law which you feel is not just, then you can immediately challenge it if it is not just, because right to life is a very important right for human survival. So the principles of natural justice need to be followed in forming that procedure which is established by law. This is all about the evolution of Article 21. It's today's situation, क्या है उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आज के डेट में, और एंटायर आर्टिकल का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया है. ऐसे ही और कंसेप्ट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या आप कोई कंसेप्ट्स आप चाहते हो जो इस वीडियो का, इस कैंपेन का पार्ट हो, यू कैन डायरेक्टली राइट टू अस at hello@iexambee.com. Prepare 50% faster with iexambee and don't forget to subscribe.